गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है GTRI इंस्टीट्यूट की, जिन्होंने कहा है कि इसराइल और पैलेस्टीन वॉर की वजह से इसराइल और सऊदी अरेबिया की जो पीस डील है वो डिरेल हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो है वो एक तरह से डिले हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। अभी G20 समिट जो सितंबर में हुई थी तब इसको अनाउंस किया गया था एक MOU द्वारा, और इसमें US, इंडिया, सऊदी, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने पार्टिसिपेट किया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर रेल कनेक्टिविटी, शिपिंग लाइंस, हाई स्पीड डेटा केबल्स, एनर्जी पाइपलाइंस बिछाने का प्रोजेक्ट है, ताकि जो है इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल और यूरोप के बीच में जो है नेटवर्क्स एस्टेब्लिश किए जा सकें और मूवमेंट ऑफ ट्रेड और सर्विसेज फैसिलिटेट किया जा सके। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ईस्ट कॉरिडोर है जो कि इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, फिर एक नदर्न कॉरिडोर है जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम इस रीजन में इंटीग्रेशन करके। ठीक है, एक काउंटर भी है ये ऑफ कोर्स चाइना के BRI इनिशिएटिव का। अब आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि इज़राइल के अभी तक सिर्फ इजिप्ट, जॉर्डन, UAE, बहरीन और मोरक्को, इन्हीं अरब कंट्रीज़ के अरब रीजन में इसके साथ इज़राइल के अभी तक टाइज़ हैं। तो इज़राइल को इस ट्रांजिट नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई तरह से मल्टीपल फ्रंट्स पर जो है वो इंटीग्रेशन करनी ज़रूरी होगी। ठीक है, अब जो ये कन्फ्लिक्ट हो गया उसकी वजह से सऊदी और इज़राइल की जो पीस डील होनी थी वो अब एक डिरेल हो जाएगी, क्योंकि अरब वर्ल्ड प्रेशर डालेगा कि इज़राइल जो ऑफेंसिव कर रहा है नदन गाज़ा में उसकी वजह से ये पीस डील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है US के भी खिलाफ मिडल ईस्ट में माहौल बनता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि US फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में। तो एक तरह से वॉर का जो इम्पैक्ट वैसे तो रीजनल है, लेकिन इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में जो है IMEC कॉरिडोर भी जो है वो सफ़र करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेशल लॉज एंड लोकल लॉज। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेशल लॉज और लोकल लॉज जो हैं उनको उनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इसलिए उनको अगर हम रिफॉर्म प्रोसेस से दूर रखेंगे तो वो एक मेजर ड्रॉबैक रहेगा। तो स्पेशल लॉज और लोकल लॉज क्या है? वो कॉग्निजेबल क्राइम्स जो IPC या फिर के अंदर नहीं आते हैं, और वो स्पेशल लॉज या लोकल लॉज कैटेगरी जो IPC की है उनको उसमें डाला जाता है। ठीक है, जनरली स्टेट गवर्नमेंट जो है ये या फिर इवन यूनियन गवर्नमेंट भी स्पेसिफिक किसी प्रोविजन के लिए लॉज बनाते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो कि एक्साइज के ऊपर या ओपीएम के ऊपर, कैटल ट्रेसपासिंग के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर, रेलवे एक्ट, ये सब स्पेशल लॉज हैं। ये लोकल लॉ क्या होता है? जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है। तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? लगभग ऑलमोस्ट 40% जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इंडिया में रजिस्टर हुए हैं 2021 में, वो सब स्पेशल और लोकल लॉज के अंदर ही रजिस्टर हुए हैं। तो अब इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों है? तो जैसे कुछ स्पेशल लॉज हैं, UAPA, मकोका जो महाराष्ट्र का है, उसमें कुछ बहुत ही डेफिशिएंट प्रोविजंस हैं, वेग डेफिनेशंस हैं ऑफेंसेस की। तो जैसे पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर भी जो है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इवन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो माइनर्स की हैं उसमें भी जो है वो एक तरह से प्रोसिक्यूशन हो जाता है। तो प्रोसीजरल फ्लॉज भी हैं, जैसे कि जो ये UAPA या फिर मकोका जैसे एक्ट हैं, इनमें ड्यू प्रोसेस की जो वैल्यूज़ हैं वो डाइल्यूट कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको जो है सेपरेट चैप्टर्स बनाकर लार्जर लीगल स्ट्रक्चर जो पीनल कोड का है उसी के अंदर डाल दिया जाए, एज़ कम्पेयर टू इनको सेपरेट लॉज बनाना। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है यूनियन और स्टेट्स को कि वो ड्यूटी बाउंड हैं कंप्लीटली मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करने के लिए। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स और रिहैबिलिटेशन एक्ट है क्या? 2013 में इसको पास किया गया था, और ये मैनुअल स्कैवेंजर्स और उन को जो है प्रोहिबिट करता है एज एम्प्लॉयमेंट, और उनकी रिहैबिलिटेशन की बात करता है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने को कहता है अनसैनिटरी लेटेंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स और मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर को। ठीक है, अब इसमें अगर कोई जो है वो इन्वॉल्व होता है, कोई इंगेज होता है इन एक्टिविटीज़ में, तो 2 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। इस एक्ट में प्रोविजंस हैं रिहैबिलिटेशन करने के सैनिटेशन वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ को, और इसमें इलीगल माना गया है कि अगर कोई भी सीवर और या फिर सेप्टिक टैंक को बिना सेफ्टी गियर के या बिना प्रोटेक्टिव गियर के अगर कोई क्लियर कर रहा है तो उसको जो है वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, कोई भी
जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो नहीं की जा सकती है। टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस का यूज़ करना है क्लीनिंग करने के लिए, सेप्टिक टैंक्स के लिए या क्लीनिंग सीवर्स के लिए, ठीक है। तो अगर स्टेट्स कैसे एक्ट को इम्प्लीमेंट करती हैं, हर स्टेट को एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं और डीजीपी होते हैं पुलिस के, और ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे ये एक्ट जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है प्रोग्रेस क्या दिख रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुलियन बेर सिंड्रोम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी हुई है इसराइल में जिसमें ये देखा गया कि कोविड-19 की जो इन्फेक्शन है वो एक हायर लाइकलीहुड लेकर आई जीबीएस जो सिंड्रोम है उसमें विद इन 6 वीक्स में, मतलब कि जिसको कोविड हुआ विद इन 6 वीक्स में उसको जीबीएस भी हो गया, ठीक है। तो जीबीएस है क्या, एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्व्स को मिस्टेकनली अटैक करना शुरू कर देता है। जनरली ये अडल्ट्स और मेल्स में कॉमन होता है, लेकिन ये ऑफ कोर्स किसी भी एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स इसके होते हैं वीकनेस या टिंगलिंग सेंसेशंस जनरली जो लेग्स में जो होती हैं, और ये आर्म्स और फेस में जो स्प्रेड होने लगती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जनरली कोई इन्फेक्शन हुई होगी तब उसके बाद जाकर ये जीबीएस होता है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन के बाद, जैसे इस केस में कोविड, ठीक है। और ये कई बार वैक्सीन की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। कोई इसका क्योर नहीं होता इस सिंड्रोम का, ठीक है। तो आईवीआईजी जो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि डोनेटेड ब्लड से लिया जाता है, उसमें हेल्दी एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसका ही यूज़ करके जनरली ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। इससे इम्यून सिस्टम का जो अटैक है नर्व्स पे वो रुक जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरबीआईज इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली आरबीआई की ombudsman स्कीम को एक अनरीजन्ड ऑर्डर के ऊपर जो है वो रिव्यू किया है। तो ये स्कीम है क्या, नवंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो रिड्रेसल प्रोसेस है, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस है आरबीआई के पास जो है उसको ईजी किया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। तो कॉस्ट फ्री रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स के लिए जो है इसको लाया गया था, और ये सिर्फ बैंक्स या फिर जो है आपके एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ही नहीं बल्कि सब इवन नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कवर करता है, ठीक है। तो इसके पीछे जो मोटिव था वो ये था कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन होना चाहिए। अभी कौन होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन? कोई भी सीनियर ऑफिशियल जो आरबीआई अपॉइंट कर देते हैं, और जब जो है वो एक एपेलेट बॉडी का भी काम करते हैं, जब जिसमें कि कस्टमर्स जो है कंप्लेंट कर सकते हैं अगर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक उनकी कंप्लेंट को 30 दिनों में नहीं सुनता है तो, ठीक है। जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते तो वो ओम्बड्समैन के पास आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके फीचर्स देखें तो ये वन पोर्टल, वन ईमेल और वन एड्रेस दे रहा है कंज्यूमर्स को ताकि वो अपनी कंप्लेंट्स जो है वो लॉन्च कर सके। कोई भी जुरिस्डिक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है। डेफिशिएंसी इन सर्विस को भी इसमें डिफाइन किया गया है जिसके ऊपर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि अगर आपको सही सर्विस नहीं मिल रही है तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब जो है कंप्लेनेंट को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा कि किस स्कीम के अंदर उसको जो है वो कंप्लेंट फाइल करनी है, एक जो है वो बस ब्रॉडर कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेफाइट। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रिसेंटली एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेफाइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जनरली जो ये मिनरल बैटरीज बनाने में काम आता है ईवीज़ की, ठीक है। और ये ग्रेफाइट एक ओपेक नॉन मेटालिक कार्बन पॉलीमॉर्फ होता है जो कि ब्लैक लेड या प्लम्बैगो भी इसको हम कहते हैं। ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, बहुत ही लाइट प्रेशर से ये क्लीव हो सकता है, और इसकी जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ही वेरी लो होती है। और अगर हम देखें तो ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है हीट को। इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, और इसको पेंसिल्स, लुब्रिकेंट्स, क्रूसिबल्स, पॉलिशेस इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे जो मेजर इसका यूज़ आजकल हो रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में यूज़ हो रहा है, और इसको माइन किया जाता है चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, नॉर्थ कोरिया और कनाडा में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक भी आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली पीएम मोदी जो है उन्होंने धौरदो विलेज जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात का है उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है होने पर UNWTO द्वारा उन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। तो ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है क्या? यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, ग्लोबल फोरम है टूरिज्म पॉलिसी का, ठीक है। 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसकी मेंबरशिप 159 कंट्रीज़ की है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वही जो यूएन की लैंग्वेजेस है वही हैं, ठीक है। मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये बेस्ट टूरिज्म विलेज
विलेजेस इनिशिएटिव है क्या? 2021 में इसको UNWTO द्वारा लॉन्च किया गया था। ये UNWTO के जो टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसी का पार्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिलान एक्सरसाइज। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है मिलान 24 एक्सरसाइज की, जो कि इंडियन नेवी होस्ट करेगी विशाखापट्टनम में फरवरी 2024 में। तो ये एक बाईएनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी 1995 से कंडक्ट कर रही है। इसमें इवन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ की भी जो नेवी होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें लार्ज फोर्स मैन्यूवर्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस ऑपरेशंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सर्विस वॉरफेयर ऑपरेशंस, ये सब जो है एक्सरसाइज की जाती हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India Middle East Economic Corridor. This topic is important for your international relations. So according to a report by Georgia Tech Research Institute, Israel-Palestine war could derail the prospect of a historic peace deal between Israel and Saudi Arabia, and this could also lead to the delay of IMEC framework. So what is IMEC? So on the sidelines of G20 summit in September 2023, an MOU was signed to develop a rail and shipping corridor which would connect India to Europe and through Middle East, between India, US, Saudi, UAE, France, Germany, Italy, and European Union. And this link consists of rail connectivity, shipping lines, high-speed data cables, and even energy pipelines. So the target is to enhance movement of trade and services from or and between India, UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, and Europe. So it would consist of East Corridor and Northern Corridor. East Corridor would connect India to the Arabian Gulf. Northern Corridor would connect Arabian Gulf to Europe. According to the MOU, IMEC is expected to stimulate economic development by enhancing connectivity and economic integration between Asia, Arabian Gulf, and Europe. And this new corridor has other important dimensions also, like securing reliable regional supply chains, better trade accessibility, and trade facilitation. It is basically geopolitically a counter to China's BRI initiative. But Israel currently has official ties with only Egypt, Jordan, UAE, Bahrain, and Morocco in Arab countries. So, in this light, this network would have to integrate on multiple fronts, because Israel would have to make peace deal with. If we look at broader picture, then Israel would have to make peace deal with Saudi Arabia to make this successful. Saudi Arabia Israel peace deal might be not be a possibility in the near future because of the offensive of Israel against northern Gaza. So that's why it is being said that even it would impact IMEC framework also. There is also a rising negative perception of US forces in Middle East, and this would have a direct impact on the geopolitical. This would have a direct geopolitical consequences for IMEC corridor. So the next topic is special laws and local laws. This topic is important for your governance section. So special and local laws have immense quantitative and qualitative relevance in Indian criminal justice system, and keeping them away from ongoing reform process could be a major drawback. So what are these special laws and local laws? So the cognizable crimes which are categorized either under Indian Penal Code or under the special and local laws, which generally the state government frames for specific issues, are SLLs. Okay, so these special laws are laws which are applicable to a particular subject, and if we take the example of these laws, then it would include excise, opium, cattle trespass, gambling, and railway acts. And the local laws are those which are applicable to a particular part of India only. Okay, so what is the significance of these SLLs? So generally 40% of all cognizable offenses which have been registered in 2021 were under these laws. Okay, so there is a need to reform these laws because we have certain special laws like UAPA, Makoka, even POXO, which have been criticized for vague definitions and terms which have ambiguous terminology. Okay, there are also procedural challenges like due process values are not or are either diluted or not followed under these special laws. So that's why it is being said that all these special and local laws should find a place within the chapters of the larger structure of the new penal codes which are being discussed now. So the next topic is Manual Scavengers Rehabilitation Act of 2013. This topic is important for your social issues. Supreme Court has recently asked the union and states that they are duty bound to pledge to completely eradicate manual scavenging under the Prevention
Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Rehabilitation Act of 2013, this which was passed in the year 2013, of course, to prohibit employment as manual scavengers and their rehabilitation of them, of course, and their families. So the broad objectives of this law was to eliminate unsanitary latrines, prohibit the employment of manual scavengers, and hazardous manual cleaning of sewer. Okay, so the if any person gets engaged in or employs such persons for manual scavenging, then it is punishable with imprisonment and even fine. So this law also outlines the provisions for rehabilitation of sanitation workers and their families, and it is illegal for a sewer or septic tank to be cleaned by a person without protective gear and with other safety precautions. So there should be use of technological appliances for cleaning these sewers, septic tanks, and other such spaces in the jurisdictions of the states. So how the states ensure that this act is being implemented? So every state must have monitoring committee which consists of the chief minister, the minister representing the scheduled caste and scheduled tribes, and the DGP also. So the state government or the union territory administration must also send periodic reports to the central government about the progress on implementation of this act. So the next topic is Guillain-Barré syndrome (GBS). This topic is important for your social issues. So in a recent study from Israel, a connection has been found between COVID infection and higher likelihood of being diagnosed with GBS within 6 weeks. So GBS is a rare autoimmune disorder under which the body's immune system mistakenly starts attacking the peripheral nerves. It is more common in adults and males, and it can affect people of all ages. So the first symptoms of this syndrome include weakness or tingling sensations. It is often preceded by an infection also, and it could the causes of it could also be any bacterial or viral infection, but it can also be triggered by vaccine or surgery. Okay, currently there is no cure for this syndrome. Generally, the IVIG obtained from donated blood, which contains healthy antibodies, it is used for the treatment. Okay, which calms down the immune system's attack on the nerves. So the next topic is RBI's integrated ombudsman scheme. This topic is important for your economy section. So Delhi High Court has recently rebuked RBI ombudsman for passing an unreasoned order, and this RBI IUS scheme was launched in 2021 to simplify the grievance redressal process at RBI by enabling customers of regulated entities like banks, NBFCs, payment system participants, and even credit information companies to register their complaints at one centralized reference point. The aim is to provide cost-free redressal of customer complaints, and it also defines deficiency in service. Okay, so the scheme adopts the one nation one ombudsman approach, and it makes the RBI's ombudsman mechanism jurisdiction neutral. So banking ombudsman could be a senior official appointed by the RBI, and even when the customers are not satisfied by the resolution offered by the financial institutions, they can approach the ombudsman, and the RBI can appoint one of its officers as ombudsman or deputy ombudsman for a period not exceeding 3 years at a time. So what are the features of this ombudsman scheme? So there is just one portal, one email, and one address for customers to lodge their complaints, and it has the jurisdiction component has been done away with to simplify the procedures. It also defines deficiency in service, and it makes it a ground for filing a complaint with a specified list of exclusions, of course, and it is no longer necessary for a complainant to identify under which scheme he or she should file a complaint with the ombudsman. So the next topic is graphite. This topic is important for your economy section. So recently, China has unveiled plans to restrict exports of graphite, which is a mineral crucial for the manufacture of batteries for electric vehicles. So graphite is an opaque, non-metallic carbon polymorph, and because it resembles metal lead, and that's why it is colloquially known as black lead or plumbago also. It is naturally occurring in the form of crystalline carbon, and it is extremely soft. It cleaves with very light pressure, and that's why it is also used in pencils also. So it has a very low specific gravity. It is extremely resistant to heat, and it consists of a ring of 6 carbon atoms, and this graphite is a very stable form of carbon. It is used in pencils, lubricants, crucibles, polishes, etc. But of course, the major use that is being currently the major
use of the graphite that is currently being undertaken is in batteries for the EVs, and it is mined exclusively in China, India, Brazil, North Korea, and Canada. So the next topic is World Tourism Organization. This topic is again important for your economy section. Recently, PM Modi has hailed the Dhordo village in Kutch district of Gujarat for being awarded as the best tourism village by the United Nations World Tourism Organization, which is the United Nations agency responsible for promotion of responsible, sustainable, and universally accessible tourism. It serves as a global forum for tourism policy. It was established in 1975. It consists of 159 countries. Its official languages are those of the UN also. Okay, its headquarters is located in Madrid, that is in Spain. So, what is the Best Tourism Villages initiative? It was launched in 2021 by UNWTO, and it is part of the UNWTO Tourism for Rural Development program. So the next topic is Milan exercise. This topic is important for your security section. So mid-planning conference of Milan 24 exercise is being hosted by Indian Navy, and this exercise would be conducted at Vishakhapatnam in the month of February next year. So Milan is a biennial multilateral naval exercise. It is being conducted by the Indian Navy since 1995, and it also includes participation from other friendly foreign countries. It involves large scale maneuvers, advanced air defense operations, anti submarine warfare, and even anti surface warfare operations. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.